Okay, so this is your SVLC Python session, and let us start with the session. So what we were doing, we were discussing about the different data types, and we had a discussion about while loop. We have seen the basics like if, elif, and how to implement switch case with the help of if and elif, since switch case is not there in Python. So all those basic things we have seen. Now today what we'll do, we'll start with the advanced data structures in Python. So the different advanced data structures which are most widely used are list, then tuple, then dictionary, set. So these are the data structures which are widely used. इनमें से भी दो जो है वो बहुत ज़्यादा use होते हैं. One is the list, and then you have dictionary. Okay. So we have seen how the data structures are mutable and immutable. Then in second session, we have seen how to implement the switch case. This is the regular disturbance. Sorry. As I said, today we will start with another one. Say advanced data structures, DS not multi-line comment with the help of multi-line constant string, advanced data structures in Python. So as I said, the different advanced data structures are list, then you have tuple, then you have set, and then finally you have dictionary. Sorry. Okay, so as we had a discussion earlier also, that in Python, almost everything is implemented using object-oriented programming. And that's a reason you have integer, which is available in the form of a class. You have float, which is available in the form of class. Then you have string, which is available in the form of class. And likewise, the advanced data structures are also available in the form of class. Okay. So for list, you have one class. For tuple, you have one class. For set, you have another class. For dictionary, you have another class. So we will see what are the applications or what are the use case scenarios for this data structures or these data types and how they are used. So to start with the list, as I said you that they are implemented in the form of a class. So if I write something like this list, so what is this list? This list is going to be a class. Okay. L small, I small, S small, T small, list. So list is the name of a class. So if I want to make a list object or I want to make use of a list, what I need to do, I need to create an object of a list type. Now in Python we have seen कि अगर हमको कोई भी object use करना है, कोई भी data store करने के लिए, so generally what we do, we directly write the object name. For example, I equals to 10. So from this data 10,
Python comes to know that this I is going to be an object of this specific dictionary. For these data types also you can directly initialize the variable or the object, and then that object will become the object of that specific or the corresponding class, and then you can start using it. So basically there are two ways. First, you can directly initialize it, and second, you can create an object of that class. Okay, तो जो हमारा पुराना तरीका है कि हम क्लास रहती है अगर हमारी, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट अगर डिक्लेयर करना है, तो we used to write the object name and sorry, class name space and then the object name equals to class name, and then in parentheses you specify the values which are used by the constructor to construct that object. So what we will do, we will see both the ways of making use of the object of this advanced data structure types. So for example, I got an object L, okay, for my list. So I can say L equals to, and a list is a collection of data elements. A list is a collection of data elements, and interestingly in this list you can have a data of any type and any combination type. I repeat, in a list you can have a data of any type and you can have a data of any combination type. It means that in my list I can have all the elements of type integer, I can have all the elements of type float, I can have all the elements of type string, or I can have few elements of integer type, few elements of float type, few elements of string type. So any combination I can have. In fact, I can go for a list within a list. So one list can consist of another list also. So there are multiple possibilities for all those things. We'll see later on. But before that, if I want to initialize the list object the way I am initializing the integer object, जैसा हमने integer object यहाँ पर initialize किया है, I equals to the integer data. The same way, if I want to initialize the list object, what I need to do, I need to, since a list is a collection of data elements, list is a collection of data elements, तो हमें इस collection को specify करना है. अब अगर आपको collection को specify करना है तो आपको कुछ तो separator बताना पड़ेगा, वहां पर कुछ तो करना पड़ेगा. तो generally, as you all know, and mostly the separator is a comma. So I can have something like this: 10, comma 20, comma 30, comma 40, comma 50. ठीक है? But this is not enough. What we need to do, हमने comma comma डाल के, हमने separator डाल के data elements तो बता दिए. But all these data elements are together forming a list data structure that also we need to specify. और वो specify करने के लिए हमें इस collection को square bracket में डालना पड़ता है. See. So now finally what I did, some object name equals to in square bracket. Square bracket is very important. वो square bracket से उनको समझ में आता है, Python को समझ में आता है कि it's a list. I repeat, due to square bracket, Python comes to know that it's a list. Okay, so in square bracket, the data elements whichever you want to have. So 10, 20, 30, 40, 50. And suppose after this, if I want to print my list, so I can simply say print L. And let me start my terminal. Let me close this off. Let me take it up. Let me shift it here. And here I would say Python, no, loop. And then I would say Python advanced data structure.py. And see here, it is listing out the list elements 10, 20, 30, 40, 50. काम और मैं ये कर सकता हूँ. I can do all this stuff on my Python interpreter itself. Are you okay with that? Yes or no? Tell me fast. Python interpreter पे ही करूँ मैं directly, या फिर आपको चाहिए कि मैं एडिटर पे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ही करूँ? उधर VS कोड में कर लो, एडिटर में मत करो. एडिटर में करूँ? एडिटर में फिर बार बार मुझे इस टर्मिनल पे आके फिर उसको करना पड़ेगा. सर लेकिन वो फाइल सेव होते जाएंगी सर, वो उससे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. अच्छा अच्छा, सर का थोड़ा सा काम बढ़ा दो, अपना काम थोड़ा कम कर लो, राइट? ना सर ऐसे नहीं.
हाँ ठीक है तो नो इश्यू। इसको स्क्वायर अच्छा ब्रैकेट चलो में कुछ नहीं भी लिख इम्पोर्टेंट रहे चीज है। तो हाँ सर एक क्वेश्चन। ओके ओके फाइन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर हमको एडिटर में भी कुछ फटाफट देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन द टू। I will switch on to the editor and then I will switch on to the interpreter. तो दोनों पे हम switch on switch off करते रहेंगे। For example, let me show you here. कि यहाँ पर मैं इंटरप्रेटर पे हूँ और मैं अपनी एक लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल L1 इक्वल्स टू इन स्क्वायर ब्रैकेट आई वुड से 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मुझे लिस्ट को डिस्प्ले करना है। मैं देख ली यहाँ पर इंटरप्रेटर पे हो तो लिस्ट का नाम खाली डाल देता हूँ L1, तो मेरी लिस्ट डिस्प्ले हो गई। ठीक है, नाउ द वे वी हैव सीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बोथ on your string, the same thing is available for your list. I repeat, जो हमने indexing और slicing string पे देखी थी, same indexing and slicing is available for your list. It means what? If I want a specific object of a list, कोई specific data element मुझे चाहिए, so I can make use of indexing. Okay, and here also the indexing starts from 0. Indexing starts from 0. So if I say L1 in square bracket 0, it will give me the first element. ठीक है, likewise if I say L1 in square bracket 1, it will give me the second element. And if I want the last element, then chalo fast. 4 If I want the last -1 sir, element, -1 अरे वाह, कोई और कुछ बताए? क्या सर? लास्ट एलिमेंट मुझे चाहिए। -1 लास्ट भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू कैसे मिलेगी? 4 सर -1 बहुत अच्छे। मैं L1 लिखकर ब्रैकेट में 4 भी लिख सकता हूँ जिससे लास्ट एलिमेंट मिलेगा। बट सपोज आई डू नॉट नो द इंडेक्स ऑफ लास्ट। If I do not know the सर index of last, इस then पे there are two ways. कोलन डालेगी सर। -1 हाँ, सर कोलन वोलन नहीं डालते, हमको खाली इंडेक्स यूज करना है। ठीक है, अब देखो सुनो गौर से, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसकी लेंथ निकालो, लेंथ में से -1 कर दो, आपको लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, इफ यू वांट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट और इफ यू वांट द लेंथ ऑफ एनी कलेक्शन, तो उसके लिए हमारा फंक्शन है लेन। तो लेन ऑफ in square bracket in a parenthesis I write L1, the object name. ठीक है, तो len is a function in Python which gives you the length. तो देखो यहाँ पर लेंथ क्या मिली, 5 मिली। अब मैं क्या करूंगा, I will write L1 in square bracket len in parenthesis L1 -1। क्या मिला, लास्ट एलिमेंट मिल गया। ठीक है, क्यों लास्ट एलिमेंट मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू डाली। कैसे डाली हमने लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू, पहले हमने लेंथ निकाली L1 की सेम लिस्ट की और उसको फिर -1 कर दिया। तो जो भी लेंथ है उसमें से -1 कर दो। नाउ इन पाइथन, पाइथन मेक्स योर लाइफ मोर इजी। ठीक है, इसके लिए तो पाइथन बना है। पाइथन क्या बोलता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना हो ना, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। क्या ऑप्शन देता हूँ, ये छोड़ दो, लेंथ ऑफ L1 ये छोड़ दो, आप खाली -1 लिख दो। आप -1 लिख दोगे ना, तो अब वो मेरा काम है, मैं -1 से समझ लूंगा कि लेंथ में से मुझे इतना माइनस करना है। अगर -1 लिखो तो -1 करूंगा, अगर -2 लिखो तो -2 करूंगा। So with that in mind, if I write in square bracket -1, then also I get the last element. So what the Python is doing, it is making the programmer's life more easier. It says कि जब भी भाई आप डायरेक्टली माइनस के साथ में कोई भी वैल्यू लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आई विल अंडरस्टैंड एज अ स्मार्ट इंटरप्रेटर कि आई विल गेट द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट लिस्ट, वॉट एवर दैट ऑब्जेक्ट इज, एंड देन वो लेंथ में से मैं ये वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो लाइकवाइज इफ आई से -2, I will get the second last. If I say -3, I will get the third last. Are you getting how it is happening? वो -1, -2, -3 वाला कोई वो जादू नहीं है, ना ही वो इंडेक्सिंग है। ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्सिंग कैन नेवर बी -1। ठीक है, और इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी आप इस भ्रम में या फिर इस कंफ्यूजन में नहीं रहना क्या पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग नेगेटिव होगी।
इंडेक्सिंग कभी नेगेटिव नहीं होती, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। दिस इज द स्मार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन विच मेक्स आवर लाइफ इजियर। ठीक है, कैसे इजियर बना, ये देखो यहीं पे मैंने आप लोग को लिख के बताया, लेंथ ऑफ L1, तो ये जो है ना, ये समझो छुपा हुआ है वहां पर। पाइथन सेज आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू नीड नॉट हैव टू वरी, बट एज अ गुड प्रोग्रामर यू शुड नो कि हाउ इट इज डूइंग। एज अ गुड प्रोग्रामर वी शुड नो दैट हाउ इट इज डूइंग। ठीक है, समझ में आया? -1 -2 -3 का मतलब, गिव मी अ फास्ट इनपुट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब कोई भी अगर आपको ऐसा बोले क्या पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं होती है। पाइथन में क्या किसी भी लैंग्वेज में नहीं होती है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से होता है। और कैसे होता है इंटरप्रिटेशन? ये यहाँ पर है, या उसकी लेंथ में से वो वैल्यू को माइनस करता है। जो इंटरप्रेटर है लेंथ में से वैल्यू को माइनस करता है। ठीक है, इस वजह से फिर हमको पीछे से वैल्यू मिलना शुरू होती है। देन नाउ लेट अस सी के राउंडिंग होती है क्या। व्हाट आई मीन टू से कि मैं -4 करता हूँ, फिर -5 ही करता हूँ, और फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मैं -6 लिख दूँ तो अब पकड़ा पाइथन ने, देखो। सर वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है सर। फिर इट मीन्स दैट कि वो नेगेटिव का जादू नहीं था, वो क्या था, वो लेंथ में से ही वैल्यू माइनस हो रही थी। तो जब तक के लेंथ में से वैल्यू माइनस होके बराबर रेंज में मिलता है आंसर, इंडेक्स उसको जब तक रेंज में मिलेगा तब तक के वो आपको आंसर देगा। जैसे रेंज के बाहर कुछ भी हो गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 - 6, 5 - 6 इज -1, तो -1 तो भाई कोई रेंज के बाहर ही है, ऑब्वियसली बाहर है, तो इट विल गिव यू अ एरर। फॉर एग्जांपल, if I write simply 6, so this is also out of range, so the same exception। तो भले फिर वो -6 हो या 6 हो, इट इज ऑब्वियसली आउट ऑफ रेंज। उसका रेंज क्या है? 0 to 4, 0 to 4 तक का उसका रेंज है, तो उसी रेंज के अंदर वो आपको इंडेक्सिंग करके देगा। देन देयर आर मेनी फंक्शंस इन द लिस्ट क्लास। अब एक बात और गौर से सुनो आप लोग, कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर डेटा टाइप के लिए, भले वो बेसिक हो या एडवांस्ड हो, पाइथन के अंदर क्लास है। क्या इंप्लीमेंटेड है? क्लास है। अगर क्लास है तो उसके मेथड्स भी होंगे, अगर क्लास है तो उसके मेथड्स भी रहेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स है? वो हर एक मेथड जो है वो एक फंक्शनलिटी देता है। हर एक मेथड क्या करता है? एक फंक्शनलिटी ऐड करता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। तो व्हेन आई हैव L1 as an object of a list class, I can make use of one function called append. तो L1 dot append मेथड को यूज कैसे करते हैं हम? ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर मेथड नेम, ठीक है, और फिर उसके आगे जो भी अगर उसके आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट। तो L1 is the object of my list class, dot append is the method of my list class, and then in parentheses I need to specify a value। बेसिकली ये मेथड का काम होता है गिवन वैल्यू को अपेंड करना लिस्ट के अंदर। तो जो L1 ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, उसके अंदर ये अपेंड करेंगे। अपेंड करेंगे मतलब कि इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट द एंड, ठीक है। नाउ इफ आई डिस्प्ले L1, तो सी अब ये 10 20 30 40 50, अब एक 60 जो है ये भी एलिमेंट इंसर्ट हो गया। तो न्यू एलिमेंट with a value 60 has been inserted at the end of my list। Likewise, if I just want to see कि भाई और क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, और क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या मेथड्स है, तो व्हाट आई कैन डू, लेट मी सी whether I can describe, या फुल है क्या, नहीं हेल्प ले लो, हेल्प ऑन लिस्ट, नहीं ये तो पूरा आ जाए। If I give a help command on my interpreter, तो हेल्प कमांड को मुझे कोई भी क्लास का नेम या फंक्शन का नेम पास करना होता है, और हेल्प कमांड क्या करता है, फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन की और उस क्लास की पूरी हेल्प हमें
प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। What I do, क्लियर है क्या? नो। क्लास लिस्ट, ठीक है, नो इश्यूज। Meanwhile, we will keep on working on different. We'll see the different functions of list, and let me come back to my editor. और यहाँ पर हम क्या करते हैं? As I said you that a list can be a collection of data of any type, any mixed type also. For example, after this 50, I can have a string ARKTC. Then after this string, I can have a float value. Then after this float value, I can have even a list within a list like this. ठीक है? तो as you can see here, देखो यहाँ पर गौर से 10 से लेके 50 तक पहले इंटीजर वैल्यू है, फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर एक फ्लोट वैल्यू है, और फिर एक उसी के अंदर एक और लिस्ट है। Now what do you need to understand? क्या L of 0 is this value, L of 1 is this value, L of 2 is this value, 3 is this, L of 4 is this, L of 5 is this value, L of 6 is this value, 10.56, and then L of 7 is one list. L of 7 जो है वो एक पूरी एक लिस्ट है। ओके, so when I display my list, so I get this पूरी एक complete list मिली जिसके अंदर list within list, ठीक है? And if I display a part of it, L minus 1, means I am expecting a last object, length of L minus 1 हो जाएगा। तो उसमें जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट है that I am expecting, let me save. Now as you can see, the last object is a list itself. Okay, so it's a list within a list. Now suppose if I need a object of this list, अगर मुझे ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, any guess what can I do? क्या कर सकते हैं इसमें? Any idea? L of minus 1 will give me that complete sublist. ये पूरी की पूरी सबलिस्ट मिल जाएगी। अब ये लिस्ट में से मुझे इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, फर्स्ट डेटा एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर L of minus 1 of 1 0. तो वो 0 कहाँ पर लिखूं, मैं कैसे लिखूं? सर प्रिंट के अंदर वहीं पे -1 के बाद एक अलग सर अंदर एक और कॉलम बनाएंगे सर। तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर डालूं, something like this. यस I'm सर। going to say, okay, let us see. Bingo, done, आ गया आपका, ठीक है? So it is making it so simple कि we can even guess. हो सकता है वो स्टूडेंट को मालूम हो, लेकिन अगर आपको ना मालूम हो तब भी आप गेस कर सकते हो, अपना कुछ लॉजिक लगा सकते हो। आपने सी प्रोग्रामिंग इतना पढ़ा है, आपने मल्टी डिमेंशनल अरेज पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव सीन ऑल दो स्टफ। तो इन दैट केस यू कैन पुट अप सम लॉजिक कि भाई ये अगर में रोज है एक 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 एक, तो अब ये मेरा एक कॉलम हो सकता है एक एडिशनल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट बाजू में लगा के चेक करके देखते, देयर इज नथिंग हार्म। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो एक्सेप्शन मिलेगा, दैट्स ऑल। ओके, so what we can do, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू है। so this works, yes, this is the way how you can access the element of a sublist of a list.
I repeat, you can access the element of a sublist of a list. ठीक है, अभी आपको अगर इसमें से और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, समथिंग लाइक दैट, तो नाउ लेट अस सी. I can loop आगे, but I would like to go for that. In Python, there is one class called range, which gives you the sequence. ये आपको क्या करती है, एक नंबर का पूरा सीक्वेंस देती है. ओके, बिफोर दिस हमने इंडेक्सिंग देखा. लाइकवाइज यू कैन हैव स्लाइसिंग आल्सो, और स्लाइसिंग के लिए व्हाट आई वुड डू, आई वुड स्टार्ट द इंटरप्रेटर. और हमारी लिस्ट है फॉर एग्जांपल L1 10 L1 equals to 10, 20, 30. ठीक है, L1 में डालूँ तो मुझे पूरी लिस्ट मिलेंगी. और अगर मैं L1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 0:2, so I am getting the first two elements. So it is starting from 0 and final value n value -1. ठीक है, स्ट्रिंग का भी याद है ना, n value -1, तो 2 - 1 that is 1, तो इंडेक्स वैल्यू 1 तक के हो जाएगा. तो 0 से स्टार्ट किया, इंडेक्स वैल्यू 1 तक के हो गया. Likewise, if I say 3, then it will go up to index value 2. ठीक है, तो 2 इंडेक्स वैल्यू तक के गया. And if I do not specify the final value, then by default the entire length would be considered. Likewise, if I do not specify the start value and I specify the end value, so by default the start value of 0 would be considered. अगर मुझे बीच का कुछ चाहिए, so I can change my start value and accordingly I can get the part of my list. So what I mean to say you, with the help of this slicing, जो आप इस पे काम करते थे स्ट्रिंग पे, वो सब काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो. And let me see the reversing part. यहाँ पर रिवर्सिंग हो पा रहा है क्या, कोलन -1. एंड यस, इट गिव्स यू द रिवर्स ऑफ अ लिस्ट. तो लिस्ट को रिवर्स करना भी काफी आसान. आपको खाली -1 बताना है, कब, कोलन. तो जो आपकी स्टेप वैल्यू है वो आपको नेगेटिव बताना है, लेकिन उसके पहले आपकी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू वुड बी 0, एंड वैल्यू वुड बी योर लेंथ -1 and your step would be -1. Okay, so this way you can get the reverse of a list. तो ये आपको reverse of a list दे देगा. ठीक है, then coming back to the range part. Okay, what is range? Any question? सर ये जो एंड वैल्यू है, अगर वहां पर 0 ले लेंगे तो अपने को L-1 वैल्यू देगा कि एंड वैल्यू देगा? एंड वैल्यू पे अगर आप 0 ले लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. नहीं सर, मतलब कुछ भी नहीं एंड मिलेगा वैल्यू सर. देखो ना, मतलब सर एंड कुछ वैल्यू भी आप नहीं यहाँ लिखेंगे पर 0 वहाँ बोल रहे हो. पर. नो सर, एंड सर वैल्यू जिसमें खाली -1 तक के जाता है. हाँ सर, मतलब आपने भी एक जगह पे वैल्यू कुछ भी नहीं डाले थे ना, वैसा सर एंड में अगर वैल्यू कुछ भी नहीं लिखे वहां पर, तो वहां पर L-1 की वैल्यू देगा कि एकदम एंड मैक्सिमम वैल्यू देगा सर? लेंथ की वैल्यू ले लेगा, तो लेंथ -1 तक के हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, मैं कुछ ना डालूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज लेंथ, तो लेंथ -1 तक के हो जाएगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर. if I need a part of it, so suppose I say my length to start to be okay. तो देखो, अगर आपको रिवर्स चाहिए, और रिवर्स भी आपको अगर पार्ट में चाहिए, यू डू नॉट वांट द रिवर्स ऑफ द एंटायर लिस्ट, आपको रिवर्स चाहिए उसके एक पार्ट का, सो दैट कैन आल्सो बी डन. यहाँ पर देखो, वी कैन चेंज दैट आल्सो. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0, 1, 2 लाइक दिस. ठीक है, और जब मैंने 1 डाला था तो 0, 1 ऐसा होता है. दिस इज फॉर द स्टार्ट वैल्यू.
So this way you can keep on playing with it and you can see the output. The output कैसे change हो रहा है, कैसे value हो रहा है. Now coming back to our range discussion. तो range में हमें क्या करना है? It gives you the sequence. क्या देता है आपको? Sequence देता है. कहाँ से कहाँ तक का? Again the same logic. Start value, final value and final value -1 तक के आपको range देगा with the step value of by default 1. अगर आपको step value change करना है, you can change the step value. So my start value is suppose 1 and my final value is suppose 10. So I would give here 11 and I take an object as I. So I equals to range and then I would say print I. अब मैं अगर डायरेक्टली प्रिंट I करूँ तो देखो क्या प्रिंट होता है. Range start value is 1 and final value is 11. If I want to see those values, ये क्या बताया मुझे? एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज चाहिए. तो बेसिकली आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लिस्ट. ध्यान से देखो, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लिस्ट. तो व्हाट आई वुड डू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ लिस्ट. ठीक है, प्रिंट करते टाइम पे मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को. नाउ लेट अस सी द आउटपुट. Now as you can see the output in the form of a list. So it is starting from 1. It is going to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it is going up to 10. ठीक है, अब ये 10 तक के जाकर बराबर से पूरा जो रेंज है उसको डिस्प्ले कर रहा है. इन सिंपल रेंज हमें चाहिए क्यों? जब भी हमें कोई भी आइट्रेशन करना है लूप के अंदर, हमको आइट्रेशन के लिए कुछ वैल्यूज अगर यूज करना है तो हम रेंज का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. ठीक है, तो रेंज में हमें क्या मिलती है? सीक्वेंस मिलती है. अगर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज, स्टेप वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं, स्टेप वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ, अच्छा ये 11 है तो 11 -1 तक के जाएंगी वैल्यू. ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू अगर 2 दे दूं तो यहाँ पर जो स्टेप 1 का जो चल रहा है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, तो एक एक ऐड हो रहा है ना उसमें. अगर स्टेप वैल्यू में 2 दे दूं तो 2 2 ऐड होगा उसमें. लेट अस सी दैट. तो एज यू कैन सी हियर, पहले 1 से स्टार्ट हुआ वो, तो इसमें 2 ऐड किया 3 बना, 3 में 2 ऐड किया 5 बना, 5 में 2 ऐड किया 7 बना, 7 में 2 ऐड किया 9 बना, 9 में 2 ऐड किया 11 बना. अब 11 जो है वो रेंज के बाहर हो गया. ठीक है, हमने फाइनल वैल्यू क्या दी है? 11. तो -1, 11 -1 तक के जाएगा, मतलब 10 तक के ही जाएगा. फाइन. तो दिस वे यू कैन गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. रेंज क्यों यूज करते हैं हम? टू गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. अब देखो हम रेंज को किस तरीके से लूप में यूज करते हैं. अगर मुझे कोई काम करना है और फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट है और ये मुझे लिस्ट को डिस्प्ले करना है, लिस्ट का कंटेंट डिस्प्ले करना है, लेकिन अब तक के हमने जो लिस्ट का कंटेंट देखे थे वो कैसे डिस्प्ले हो रहा था? पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी. एज वी कैन सी हियर, यहाँ पर तो ये रेंज डिस्प्ले हुई, यहाँ पर पूरी लिस्ट डिस्प्ले होती है, या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिस्ट का जो है वो डिस्प्ले होगा इंडेक्सिंग यूज करके. बट व्हाट इफ आई वांट, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई ना, व्हाट इफ आई वांट अ सिंगल डेटा एलिमेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन न्यू लाइन, और फॉर सम रीजन आई वांट टू प्रोसेस देम. इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रोसेस देम. मुझे उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करना है. सो आई नीड इंडिविजुअल एलिमेंट टू बी एक्सेस. मुझे एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है लिस्ट का. ठीक है, तो उसके लिए देखो जनरली क्या तरीका होता है पाइथन के अंदर, वी मेक यूज ऑफ फॉर लूप. अब जो फॉर लूप जो पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेड है वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में इम्प्लीमेंटेड है. तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि अटपटा लगे, लेकिन जैसा तुम लोग उसे यूज करना शुरू करोगे ना तो तुमको लगेगा यार ये कितना आसान तरीका है फॉर लूप को यूज करना, या फिर यू वुड से कि ये कितना एक्सप्रेसिव वे है फॉर लूप को यूज करना. ठीक है, लेट मी शो यू. इट सेज लाइक दिस, फॉर सम वेरिएबल से अगर मुझे इंडेक्सिंग यूज करना है तो मैं आई यूज कर सकता हूँ, और आई कैन से फॉर वैल्यू इन. ठीक है, इन माय लिस्ट. लिस्ट क्या है मेरी? एल है.
So for the value in my L, I would say, देखो वहां पर कोलन डालो, कोलन डाल के जैसे मैंने एंटर मारा तो मैं यहाँ ब्लॉक स्टार्ट हो गया इंडेंटेशन के साथ. I would say print val. That's all. सेव करता हूँ मैं इसे और यहाँ पर आया. हाँ सी है. पहले हमारी पूरी लिस्ट डिस्प्ले हुई, फिर हमारी वो रेंज डिस्प्ले हुई, फिर अब देखो लिस्ट का एक एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, एक एक वैल्यू डिस्प्ले. पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, and they are getting displayed as a value, as a data. Then AIKTC, then 10.56, and then 1, 2, 3, a sublist 1, 2, 3. And how it is getting done? In a very easy way. For my variable val, now this can be any variable, I, X, Y, Z, K, J, whatever variable I want to initialize. So for the val I mean to say value. So for value in operator use किया L is the name of my object. Which object? The list object. So for value in L, print val. That's all. Done. अब वो क्या करेगा, वो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेगा और लिस्ट की लास्ट वैल्यू तक के जाएगा. ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करके लिस्ट की लास्ट वैल्यू तक के जाएगा और एक एक करके सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा. ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड iterations, as we all know. And ये जो ऑब्जेक्ट L है, जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, वी कैन से दैट इट इज एक्टिंग एज आइटरेटर और आइटरेबल. ठीक है. और वो आइटरेटर आइटरेबल क्या होता है विल सी लेटर, अभी उसमें नहीं जाते. एक और फॉर लूप में लगाता है यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज, और अब मैं रेंज को स्पेसिफाई करता हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे 1 to 10 डिस्प्ले करना है, so I would say 1, 11 and my step value would be 1 colon and print value of I. Done. क्या करता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ. So first, because of the first for loop, we got the elements of the list, individual elements, and then because of the second for loop, I could get this value 1 to 10. ठीक है. तो ये 1 to 10 सेकेंड फॉर लूप की वजह से हमको वैल्यू मिल गया. तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर क्या होगा, एक रेंज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज जाएंगी 1 से लेके 10 तक के. और फिर फॉर आई इन रेंज, अब वो रेंज में से एक एक वैल्यू आई वेरिएबल को मिलती जाएगी, पहली वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक के, और फिर आई से वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएगी. ठीक है. नाउ द सेम थिंग आई कैन use, the same logic I can use for iterating into my list. Listen here carefully. The same logic I can exploit to iterate into my list. Okay. Now to iterate into my list, I would like to start from 0. एक और for loop लेते हैं. So for I in range 0 से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है, उसकी लेंथ -1, जो भी मेरी लिस्ट की लेंथ है, तो लेंथ तक के लेना है, क्योंकि ये -1 तक तो ऑटोमेटिकली जाएगा. तो लेंथ ऑफ माय लिस्ट L. ओके. एंड माय स्टेप वैल्यू इज 1. देन हियर आई वुड से प्रिंट, देखो मैं इंडेक्सिंग के लिए बता रहा हूँ. हाँ, माय ऑब्जेक्ट इज L, सॉरी, and my index is I now. Try to understand. जो हम लोग for loop के अंदर जनरल, ये C++ के अंदर हम लोग जनरल कहते हैं ना, for I equals to 0, I less than equals to I less than n, I plus plus, और फिर इसके अंदर प्रिंट के अंदर हमने अरे का नाम दे दिया, उसके ब्रैकेट में I लिख दिया. More or less same logic for I in range 0, length of L, print L in square bracket I. Okay. I save this code. I come back to this point.
नाउ सी इट, पहले फॉर लूप से आपको ये मिला लिस्ट का कंटेंट एक ऑब्जेक्ट करके, दूसरे फॉर लूप से हमको ये मिली रेंज 0 to 10, ठीक है। तीसरे फॉर लूप से फिर से हमें लिस्ट का कंटेंट मिला एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 10 20 30 40 50 yeah, get it 10.56 1 2 3. So this is how, now this is how you can access the individual element of a list or a collection using a for loop, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली यूज किया फॉर वैल्यू इन माय ऑब्जेक्ट नेम एंड आई कैन either प्रोसेस द वैल्यू और प्रिंट द वैल्यू। अगर मैं वैल्यू को प्रिंट कर पा रहा हूँ तो मतलब कि मैं उसको प्रोसेस कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी उसको प्रोसेस करना है, उसको मुझे डबल करना है, उसको स्क्वायर करना है, उसको हाफ करना है, ठीक है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू दैट, ठीक है। देन वी हैव सीन कि कैसे हम रेंज को यूज करके इंडेक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने थर्ड फॉर लूप में क्या किया, हमने रेंज को यूज किया और हमने इंडेक्सिंग की हमारी लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के एक ऑब्जेक्ट। See carefully what we are learning. We are learning to access individual object of a list, ठीक है। And then the same thing we are doing here also. यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, खाली दो अलग तरीके, that's all. And here we are learning how to make use of range for indexing using range for indexing, ठीक है। तो किसी भी कलेक्शन में अगर आपको इंडेक्स करना है, अगर आपको आइपरेट करना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ रेंज। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज लेट मी नो। यस सर। यस सर। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है बराबर से? यस सर। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं ना? इट इज स्टिल क्वाइट सिंपल। जस्ट अ मिनट। Now you need to tell me whether your list object is mutable or immutable. Sir, it is mutable. Mutable. Yes, other students. Mutable. Mutable or Yes, sir. immutable? Mutable, sir. Mutable means you can change it. Immutable means you cannot change it. So whether list is immutable or mutable? सर म्यूटेबल है सर। अपेंड फंक्शन यूज करके अपन उसको चेंज ही कर रहे हैं ना एक तरीके से। Yes, good, very good. ये अब जो आंसर हुआ ये हुआ रीजन के साथ, ठीक है। It is mutable because we can append into it. We can change the content directly. हमने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट के एड्रेस चेंज नहीं हुए, और ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है then such a thing is called as a mutable data structure or a mutable data type. Just a minute.
Okay, back to the coding. And as I said you that your list is a mutable object, so it can be changed with the help of append, and there is one more function called insert. So with the help of insert function also, you can change the content of a list. Just a minute. I'm stuck in somewhere. Just a minute, please. Hello. Yes. So can we only add at the end of the list, not in between elements? Between also, insert function is there. With Okay. the help of insert function, list के अंदर एक insert method भी है list class में. So using that, you can insert the element at any position. ठीक है? आप किसी भी position में, start में, middle में, कहाँ पर भी insert कर सकते हो. Let me show you that also. Just a minute. चलो, directly उसी पे काम करते हैं. What I do, I get into my Python. And let me get a help on insert. Sorry. List dot insert. Okay, as you can see, the name of the method is insert. The first is the self, obviously, then the index position, and then the object. So insert object before index. So let's check on that. L equals to 10, 20, 30. Okay. So अब L में हमारा 10, 20, 30 है. Now what I will be doing, L dot insert, and I would say, तो वहाँ पर self तो चला गया. Index value, say the index value is 1, and my object is 5. And if I display L now, okay. So as you can see, so at an index value 1, so 0 and 1. So at this index value, 5 would be inserted, and the rest of the element would be right shifted by 1 position. So this is how you can insert the element at any position. So मुझे अगर at the beginning अगर insert करना, so I can put up an index value of 0, and suppose my value is, or the data is 15. Now if I display, so it is starting with 15, and then I got 10, then I got 5, then 20 and 30. So this way you can insert at any given position. Okay. So this insert is something like which can be inserted beginning, inserted end, inserted in between, anywhere. कहाँ पर भी आपको insert करना है, so you can insert element or the data. And since it is a list, you can insert element of any type. Okay, so as you can see, at the index position 1 now, you'll be getting AI, and then the rest of the data accordingly adjusted. So this way you can insert the element of any type at any position into a list with the help of insert. Any query into this? इसमें कुछ question, कुछ doubt? No, sir. No, sir. Okay. So as I said you that
You can append or you can insert. Likewise, आप delete भी कर सकते हो. I think there is a pop function. So let me get a help on it. List dot pop. So yes, pop method is there. Index -1. So it always pops from the end of a list. So let me pop one data element. ये हमारी list का content है. And if I say l dot pop, so it is returning 30. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि 30 उसने return किया. And if I display the content of my L, so 30 has been removed. 30 अब last में से निकल गया. And likewise, you can delete any element from between also. I think the function is remove. So let me check for it. List dot remove कुछ है क्या? Yes, so remove method is there, and here you specify the value. Okay, अब यहाँ पर value आप बता रहे हो, आप index position नहीं बता रहे, आप value बता रहे हो. वो value जहाँ पर भी उसको पहली मिल गई तो first जो occurrence है वो remove करेगा. For example, if I say L dot remove, and if I specify a value 50, so I think 50 does not exist. Let's see. So it gives you an exception, 50 is not present, something like that. And if I say 5, so 5 has been removed. And if I display my list content, so as you can see 5 has been removed. ठीक है, यहाँ पर 5 था पहले और अभी 5 has been removed. यहाँ पर 10 है अभी. So let's see, या फिर मैं एक और 10 डाल देता हूँ. So L dot append, and I put a one more 10. And if I see the content, तो यहाँ पर 10 दो बार है. तो जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो उसको रिमूव करता है. So let's see, L dot remove, and I want to remove 10, and I display the content of list. So as you can see, this first 10 has been removed. Okay, जो पहला 10 है वो remove हुआ. So that is the remove method. Likewise, there are few more methods in the list class which you can use to operate on the data of a list, to perform various operations on the data of a list, and there are not many functions. Fortunately, मुझे वो method नहीं मिल रहा. Okay, fine. So what we'll do, we'll stop here today, and we'll see the other advanced data types in the next class. So this is your list, a very useful one, and काफी सारे काम लिस्ट पे आपके हो जाते हैं. तो आपको लिस्ट के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करना है, और लिस्ट के अलावा जो और दूसरे टाइप्स है, डिक्शनरी, टपल, सेट, विल सी देम इन द नेक्स्ट क्लास. उसके अंदर ज्यादा कुछ मेथड्स और ज्यादा कुछ ऑपरेशंस नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ तो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है. तो जो इम्यूटेबल है उसके ऊपर तो कुछ ज्यादा काम आप कर नहीं सकते, तो उसमें मेथड्स भी बहुत कम होते हैं. जो म्यूटेबल होते हैं, जो कि चेंजेबल होते हैं, खाली उनके ऊपर ही कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं. ओके.